Hello everyone, welcome to OASHUB. So OPSC Prelims जोटा कि तुम October 15 रे हबार अछि. तो लास्ट ईयर जदि हमें OPSC Prelims रे MCQ क्वेश्चन देखा ज्योग्राफी रो जो ह्यूमन ज्योग्राफी रो बहुत सारा क्वेश्चन आसीथिला. तो जहाँ भी हमें देखा कि लास्ट 2 to 3 इयर्स रो क्वेश्चन पेपर को असेस कला पर लागिला कि ह्यूमन ज्योग्राफी रो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जदि मु तुम को किछि देउछि दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. सो मु टाइम वेस्ट करबिनी. आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव टू द questions discussion. So 25 most important human geography रो question हमें डिस्कस करबा आज. सो टुडेज आम देखा दैट मीन्स आम थियोरीज उपर आम बेस्ट कर दैट विल बी खास करके मैं पार्ट 2 रे आम थियोरीज उपर डिस्कस करबा. द फर्स्ट एमसीक्यू आम देखा ऑथर होल्म नोन फॉर व्हाट. सो ऑथर होल्म जदि आम जियोग्राफी कथा देखा सो ही इज नोन फॉर व्हाट. ऑप्शन 1 द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, द थर्मल कन्वेक्टिव करेंट्स, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड मॉनसून. तो ऑथर होल्म ज्योग्राफी कौन पे जाना जाए. सो जदि आम आंसर देखा दैट इज द व्हाट थर्मल कन्वेक्टिव करेंट. ना थर्मल कन्वेक्टिव करेंट कोठी देखा जाए मेंटल ऑफ अर्थ, दैट इज इन मेंटल ऑफ अर्थ. ऑब्वियसली तुमने समस्ते जानछ कि कोर मेंटल एंड क्रॉस्ड है ना. तो दैट मीन्स जो हमारा मेंटल अच्छी द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ जो लिक्विड माग्मा जो सर्कुलेट करी थाए. ओके द्वारा जो करंट डेवलप हुए ताको कहा जाए थर्मल कन्वेक्टिव करंट विच इज द ड्राइविंग फोर्स for the plate tectonic and for the all sort of the I would say what endogenetic forces which is coming out. Baki rohila magnetic field of the earth. Magnetic field of the earth is depend on the again because of the what हमें mental ପାଇଁ କହିବା और आई वुड से बिकज ऑफ द व्हाट मैग्नेटिक फील्ड. कारण यहाँ भी बिलीव कराए कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ जोटा कि समस्त जानच कि आमर जियो नॉर्थ आउ गोटे अच्छी जियो साउथ आउ गोटे मैग्नेटिक नॉर्थ आउ गोटे अच्छी मैग्नेटिक साउथ. तो लेट से आमर होची एटा जियो नॉर्थ एंड जियो साउथ. जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ तार उल्टा ही थाए. सो जदि आम जियो नॉर्थ आपको देखा तो मैग्नेटिक इट वुड बी साउथ एंड इट वुड बी मैग्नेटिक नॉर्थ उल्टा ही थाए. बाकी से मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन अच्छी तो सेगुड़ा मुझे जाऊनी तुमर. तो फास्ट एबे आम खाली ऊपर ऊपर टिके डिस्कस करदेवा सो दैट हमको बहुत सारा एमसीक्यू कवर कर अछि. तो ऑब्वियसली दैट वुड बी थर्मल कन्वेक्टिव करंट. मु कहली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन नुह. नेक्स्ट इंपोर्टेंस थ्योरी की जो आम जियोसिंक्लाइन थ्योरी इज गिवन बाय हूम. जियोसिंक्लाइन थ्योरी जब आंसर को देखा कोबर. व्हाट इज जियोसिंक्लाइन जदि तुमको इधर जियोसिंक्लाइन ऊपर एमसीक्यू आसला कि इंडिया रे कोठी जियोसिंक्लाइन थिला आगुर कोठी थिला दैट इज द टेथिस सी. दैट इज व्हाट टेथिस सी. So Tethys Sea was used to be the geosinclines in India, which extend from Myanmar to Mediterranean Sea. Your present-day Assam Valley, Gangetic Plain, Rajasthan Thar Desert, they are the part of the old Tethys Sea part, which is folded to lifted to such a mighty Himalaya. दैट मीन्स आम कह जो जियोसिंक्लाइन्स होची कौन ताले तुम कह सर जियोसिंक्लाइन प्रेजेंट मुझे तुमको कहली इंडिया रे कोठी जियोसिंक्लाइन अछि. दैट इज द गंगेज प्लेन जहाँ आम कह गंगेज प्लेन आसाम वैली एंड द थार डेजर्ट जो अच्छी दैट इज द गैंगेटिक बामे दैट इज द जियोसिंक्लाइन पार्ट रे आसुची. नाउ जदि तुम कह जियोसिंक्लाइन कौन जियोसिंक्लाइन्स होची सिंपल दे आर द शैलो नैरो वाटर बॉडी. दे आर द शैलो narrow water body subject to mobility. They are also subject to mobility. तुमको सर आपको किए देते डाल and dana. That was given by whom? Dana. The definition was given by Dana. Geosyncline. So geosynclines are folded to the mighty mountains like Himalaya. तो आगुरु गोटे concept that means यदि geosyncline theory जो उनको geography optional से उनसे जानी चंदी. The present day young mountains of the Alps like the Himalaya, is Andes, Rockies, Alps mountains, these mountains are folded to the present day the mighty the mountains by folding the geosynclines. So geosynclines are the long, it would be long, narrow, shallow, mobile water bodies. They are bonded by craton. They are bonded by whom? Craton or the large water mass, sorry, land mass. For example, this is the Indian peninsula and this is your Tibet. गोटे साइड टाइबेट रहा गोटे साइड इंडिया. तो मझे जो तुम गैंगेटिक प्लेन रोचे दिस इज द जियोसिंक्लाइन जोटा गोटे आगु वाटर बॉडी थिला अपलिफ्टेड होकर बर्तमान हिमालय रे कन्वर्ट हो जाइए. तो ये थिला आम है ना. दैट मीन्स कोवर. ताले ऑथर होल्म कौन देछि थर्मल कन्वेक्टिव करंट. वेबर कौन देथिला इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी इन ज्योग्राफी. इट्स ए इंडस्ट्रियल लोकेशनल थ्योरी. डैविस कौन देथिला डैविस थ्योरी तुम जानते हो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट. सी जने कहउछथि जियोमॉर्फोलॉजिस्ट द डैविस जियोमॉर्फिक साइकिल जाको कौन कहै द डैविस जियोमॉर्फिक साइकिल से देथिले. ओके the Davis कौन देथिले जियोमॉर्फिक साइकिल्स in 1889. It is long way back in 19th century. This person gave the Davis
Okay, Davis theory in 1889. Weber, that is what industrial location theory, again in it was in during the quantitative revolution phase of geography. Author Holm thermal convective current ଦେଇଥିଲେ and Cobo talk about the geosynclines theory. The geosynclines ର meaning କହିଥିଲେ India ରେ କୋଉଠି ଅଛି କହିଥିଲେ. That comes to the sea floor spreading. The sea floor spreading is given by whom? Now ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, it was given by Harry Hess, the American geomorphologist, but it was extensively discussed by the Vince and Matthew. The Vince and Matthew, they talk about the mid-oceanic ridge. They talk about what? Mid-oceanic ridge. The Vince and Matthew, they extensively talk about the sea floor spreading. This needs extensive study in the Indian Ocean and also the East Pacific Ocean. So elaborately they talk about the what? Sea floor spreading. But exactly the definition of the fasting, it talked about the Harry has sea floor spreading. Okay, then author Holm already I discuss करते, तो answer is going to be the Harries. That comes to the fourth answer. Fourth question को देखो, continental drift theory given by whom? Alfred Wegener. Alfred Wegener 1912. In 1912, Alfred Wegener, 1909 and 1912, in between Alfred Wegener gave the revolutionary theory in geography, that is the continental drift theory and the hypothesis. Exactly that turned to be the theories in 1960s. Earlier it was hypothesis in 1909 to 1912. Then when it comes to the 1960s, Harry Hess, Matthew and Vinson, when they proved and exactly they talked about extensively talk about the sea floor spreading, that time it came out or it was proven that the continent was drifting, which was talked by Alfred Wegener in 1909 and 12 in between. Okay, say समझ कहते हैं. So author हम कोवर हम discuss कर सकते, तो obviously that is the E is the answer. Then ଆମେ ଯେତେବେଳେ fifth question, Davis and Penks, they what geomorphic cycle କଥା କହୁଥିଲେ. Davis and Penks ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, they are the what? Davis is the American geomorphologist, Penk is the German geomorphologist. Landform କଥା ନୁହଁ, geomorphic cycle କଥା ସେମାନେ discuss କରୁଥିଲେ. Now comes to the what? ଆମେ ଦେଖିବା 6th number. What is isostacy? Isostasis meaning होची equipoise. It's what? Equipoise. So answer would be equipoise. That comes to the then equal salinity को कौन से? Isohaline. It would be what? Isohaline. Isobar. There is what? Isobar. There is isoheight. There is then isobar as well. Isoheight is there. Isohaline is there. Isonape is also. Isonape is there. Isonape is there. So isonape is there, isoheight is there, isobar is there, isohaline is there. So these are the equal. Then isocontour, or also it would be contour is there. Contour kole to height, Himalaya height is contour. तो एमती तुमको isoheight kole equal rainfall, isonape kole equal cloud को join करे, isobar kole pressure, isohaline kole salinity. तो ओके, ये भी तुमको क्वेश्चन आसी पड़े. ठीक अच्छे. देन आम आसवा, दैट मीन्स आइसोस्टासी होची तुम इक्विपोज. आइसोस्टासी किए एरी एंड प्राट्स किए डिस्कस करते एरी एंड प्राट्स इन ज्योग्राफी जदि तुमको पचारे किए देते, इट इज एरी एंड प्राट्स आइसोस्टासी को डिस्कस करते. Now Walker circulation कौन? The next MCQ, what is Walker circulation? Walker circulation option 1 तुम्हारा जो atmospheric circulation in the Pacific Ocean, this is the correct one. Walker circulation. Okay, ये कौन सी ocean circulation हो बा ocean current हो कि temperature हो? The Walker circulation is the atmospheric circulation over the Pacific Ocean. ध्यान से मन रखो, it is atmospheric circulation, not oceanic circulation, but that atmospheric circulation is having link with the Pacific Ocean current. So that is why it would be Walker circulation. It was identified by this person. So on the basis of his name, it is given the Walker circulation, which impact the what monsoon in India as well. Then comes to the tricellular model. Tricellular models कौन? It's atmospheric circulation जो थ्री तुम्हारे तीन डेथ है. गोटे था तुम्हारे what हार्डलेस सेल, फेरल सेल. तो गोटे था तुम्हारे कौन? हार्डलेस सेल, गोटे था फेरल सेल, आ गोटे था पोलार सेल. So atmosphere जदि हमें circulation कथा देखिबा, our atmosphere is not monocircular. That is what atmosphere. Our atmosphere is circulating in 3 parts. तो प्रथम है हार्डलेस सेल, तापर से फेरल सेल, सो देन आसबे तुमरो पोलार सेल. तो तीनटा सेल अछि. दैट मींस द अर्थ एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन होछि, ए तीनटा स्मॉल सर्कुलेशन जाके कहै छै ट्राइसेलुलर मॉडल. फर्स्ट होछि हार्डलेस सेल क्लोज टू द इक्वेटर.
पोल आउ इक्वेटर मझे अच्छी तुम फेराल सेल देन आस पोलार सेल ओके ये हूँ ट्राइसेलुलर मॉडल next we will comes to the what industrial location theory given by whom it is what Weber industrial location theory so Weber is what industrial location theory jaithile on the basis of cost of transportation what cost of transportation he talked about how that is what transportation cost determine the locational factors for the industry or this person Weber transportation cost जितपा Weber जदि industrial location कथा देखिबा कोठी industry हबा कथा the locational factor which is responsible for the industry's location पे ये कहले बा locational factor according to him transportation cost plays one of the significant role while determining the farm's location apart from that से मध्य कहले that is the what ISO DAPN or equal transportation cost or production cost then critical isodependent and कौन critical isodependence जो थे labor loss को cost को include करा जब कोबर कथा में पढ़ी से जिग सिंक्लाइन von Thunen कौन देथिले agricultural typology कौन देथिले agricultural topography the world agricultural topography को divide करथिले okay so that would be there that means हमें जदी देखिबा von Thunen model एग्रीकल्चरल टॉपोलॉजी जो तुम 13 टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी को डिवाइड करते हैं बहुत तुम्हें एक मिनट सॉरी ये रहबा तुमरो कोन सॉरी ये कोन रहबा तुमरो सो दैट मींस वॉन्थुनेन होची एग्रीकल्चरल लोकेशनल थ्योरी तो एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी देथिले वॉन्थुनेन मॉडल सो वॉन्थुनेन टॉक्स अबाउट कि कोठी को क्रॉप ग्रो करा जिबा कथा जेमति कि मार्केट पाखरे कोन रहिबो मार्केट ठु दूरे रे कोन रहिबो okay so von Thunen talk about the locational factor for agriculture like Weber talk about the locational factor for the industry whereas the von Thunen talk about the locational factor for the agriculture now tanko vitare the cost of land and the cost of transportation is important so ethi tanko answer kono cost of land plus cost of transportation is important to determine the which crop would be grown where कहले मार्केट पाखरे कोन रहबो ताठु दूरे कोन रहबो ताठु दूरे कोन रहबो then we will comes to the central place theory given what ये theory कौन हुए settlement कथा हुए किए देथिले central place theory Christaller it was what Christaller ये किए देथिले Christaller the Christaller देथिले central place theory जोटा कि which talk about the settlement कथा हुए काना industry पे Weber industrial location agriculture पे von Thunen देखिले migration पे हमें आगो को देखिबा ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी लास्ट ईयर ओपीएससी क्वेश्चन पचारथिला जो थरे तुम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जदि तुम देखिबो दैट इज द स्टेज 1 स्टेज 2 3 एंड 4 सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पासेस थ्रू द 4 स्टेजेस फर्स्ट स्टेज को कहा जे अर्ली एक्सपांडिंग सेकंड को कहा जे तुमरो दैट मीन सॉरी फर्स्ट स्टेज को कहा जे हमर कोन स्टेज 1 और द अर्ली एक्सपांडिंग देन आसबो तुमरो कोन early expanding 2 then as well tomorrow expanding 3 then expanding 4 तो okay that means हमें कहबा so first धाकु कहे हमें कहबा प्री इंडस्ट्रियल लेवल है ना तो जो तुमको ऑप्शन पछतला कोठी ना सब हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुए सेकंड स्टेज रे थर्ड स्टेज रे जदि हमें देखबा धीरे मैच्योरिटी आसबो एंड फोर्थ स्टेज रे डेवलपिंग कंट्री बा डेवलप्ड कंट्रीज विल कम्स थर्ड आउ सेकंड एंड थर्ड रे डेवलपिंग countries will comes so that means demographic transition theory talks about how population grow केमती गोटे देशर population grow करि थाए तार चारिटा स्टेज अछि demographic transition theory रो गोटे जदि मु तुमको theory देखिबी so theory would be looks like this okay 3 4 so here you can see the difference so the difference between the population here would be आउ गोटे जदि हम तुमको देखिबी that means it would be like this so population growth rate so highest कोठी रहबो that is the stage 2 the growth rate would be highest in the stage 2 so that is would be there then Rostock model the Rostock कोन हुए that is the Rostock models talk about the what that is the Rostock models जदि तमे के पढी थिबो हना that is the what stage of growth the Rostock model हुए the every economy passes through 5 stages केते 5 stages देखि जाइथले that means the development model the growth and development model okay प्रत्येक देश गोटे कंट्री अमेरिका केमिति डेवलप हैला को स्टेजेस देखि से जाइछि okay so that stages talk about the Rostock model of growth the Rostock model of growth talks about the growth model migration agriculture में डिस्कस करि सारिछे
देन नेक्स्ट आसीबा आमे growth pole and growth centers they talks about what economic activities jemti Delhi, Bombay, Bangalore, these are the what growth pole and these are the growth poles. They not talk about agriculture, they not human races, not cities. karon eta asbo tomar crystal theory human races ame dekhiba agu. Now the pull factor and the push factor ये कोथ रे Avert Lee model, that is for the migration model. ये कौन था तुम्हारो migration model. So push factor and pull factor associated with the migration. ये कहाँ पे associated migration. So this is associated with migration. Okay. तो Avert Lee देखले push factor and pull factor. पुश फैक्टर कौन जोटा कि बाध्य करे जमती वार नेचुरल डिजास्टर पोवर्टी मालन्यूट्रिशन दिस आर द पुश फैक्टर पुल फैक्टर कौन इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ एनवायरनमेंट इकोनॉमी जो प्रॉस्पेरिटी एजुकेशन दिस आर द पुल फैक्टर्स अर्थात जमती कि यूएसए जन लोक यूएसए जावाई कहीं चाहूँ कारण से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनवायरनमेंट भल सबकि भल दिज आर द पुल से लोक चाहूँ से जावाई अट्राक्ट करुच्ची पुश अर्थात कौन जमी लिबिया सुडान से आम कह कौन दैट इज अ व्हाट कन्फ्लिक्ट सो दैट लोक मैंने डरिकी पलाऊँ दैट इज अफगानिस्तान दैट इज द पुश फैक्टर देन रिस्ले एंड गुहा क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू व्हाट द ह्यूमन रेसेस फॉर द ह्यूमन रेसेस ओके ध्यान से ठीक मन रखियो ह्यूमन रेसेस अशोक मित्रा क्लासिफिकेशन कौन पाई इंडियन सिटीज क्लासिफिकेशन पाई अशोक मित्रा इंडियन सिटीज गोटे तुम कल्चरल सिटी हो पारे इंडस्ट्रियल हो पारे मिक्सड हो पारे ट्रांसपोर्टेशन हो पारे डिफेन्स हो पारे रोन्स ऑफ क्लोफ ये क्या सहित लिमिट्स टू ग्रोथ सहित लिमिट्स टू ग्रोथ कहले नेचर गोटे लिमिट्स अच्छी ग्रोथ ना नेचर निजक चेक कर तो लिमिट्स टू ग्रोथ तुम ये रोम्स ऑफ क्लॉफ सहित विटेलसी क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी ये कौन एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी कहले केते प्रकार जमती तुम कोटी इंटेंसिव फार्मिंग कोटी एक्सटेंसिव फार्मिंग कोटी पैडी हुए कोटी व्हीट हुए कोटी आम कह हंटिंग होची कोटी तुम गेजिंग होची तो दीज आर द टाइप ऑफ टोपोग्राफी कहले एग्रीकल्चर को डिवाइड करवा डिफरेंट टाइप्स रे एमती 13 टाइप्स रे डिवाइड करवा विटेलसी क्लासिफिकेशन वर्ल्ड एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन सिंपल वर्ल्ड एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी विटेलसी देइथिले देन हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड ये तुम्हारा जोग्राफिकल थ्योरी हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड जोग्राफिकल थ्योरी हार्टलैंड कथा कहे जमती कि रशिया को कई कहीं आज पर्यंत माने जीति पारि ना बिकज ऑफ से हार्ट रही ता चारिपटे रिमलैंड अच्छी तो जे रिमलैंड को कंट्रोल करिवो से हार्टलैंड उपरे कंट्रोल करिवो आ जे हार्टलैंड रही ताकू डिफिकल्ट हबो कारण से टेक्नोलोजी नथिला तो हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी टॉक्स अबाउट द कौन केमिति गोटे देश सस्टेन करूची माल्थुजियन थ्योरी रिलेटेड टू पॉपुलेशन ये कौन पॉपुलेशन जमती कि तुम आम देखी आ पूर्व कौन दैट इज द देख पॉपुलेशन उपर तीन टा अच्छे गोटे तो मार्क्सियन थ्योरी अच्छी गोटे माल्थुजियन थ्योरी अच्छी गोटे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी तीन टा अच्छी तो जो माल्थुस मॉडलटा नेगेटिव मॉडल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल आ गोटे अच्छे मैक्सियन मॉडल तीन टा अच्छी ना 22nd क्वेश्चन आम देखा व्हिच वन इज द सैटेलाइट टाउन ओबियसली नोएडा सैटेलाइट टाउन कहले मेन टाउन उपर जे भरोसा करिकी जार ग्रोथ होता है जमती कि नोएडा रही फरीदाबाद रही तुम रोहिणी सेक्टर कथा नहीं जाओ गुरुग्राम कथा नहीं जाओ द्वारका कथा नहीं जाओ फरीदाबाद कथा नहीं जाओ गाजियाबाद कथा नहीं जाओ है ना दीज आर द सिटीज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिल्ली से ये गोटे नोएडा भुवनेश्वर नुह कि बॉम्बे नुह लिस्ट कॉस्ट थ्योरी एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल जोटा मुझे कहली वेबर लिस्ट कॉस्ट थ्योरी है ना बाकी आम स्मिथ इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी अच्छी वंथुनेन एग्री आम देखी वंथुनेन कौन पाई ओबियसली क्रॉप पाई एंड द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन रो मीनिंग कौन ज्योग्राफी रे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन रो मीनिंग कहले 1960s आम कहबा द यूज ऑफ क्वांट इन ज्योग्राफी रे आम कहबा यूज ऑफ क्वांट बहुत अधिक होता तेणु से टाइम को कह क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन व्हाट इज रैडिकल ज्योग्राफी कोठी रैडिकल ज्योग्राफी इमर्ज होता रैडिकल ज्योग्राफी इमर्ज होता यूएसए रे कोठी होता यूएसए रे तो नॉर्थ अमेरिका रे रैडिकल ज्योग्राफी कौन कहे रैडिकल ज्योग्राफी कहे कहीं समवन इज मोर डेवलप वाई समवन इज लेस डेवलप फॉर एग्जांपल केबी के रीजन कथा दे आर लेस डेवलप वेयर एज द कटक भुवनेश्वर पुरी दैट द डेवलप तो यही प्रकार कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्क्रिमिनेशन सो रैडिकल ज्योग्राफी टॉक अबाउट दिस तो ये था 25 इम्पोर्टेंस ह्यूमन ज्योग्राफी MCQ सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग लाइक इट शेयर इट एंड कमेंट इट थैंक यू ऑल हैव अ गुड डे टू ऑल